प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज सलमान खान ने बिग बॉस में बोला था कि जिया ऑलवेज गेट्स बिट्रेड इन रिलेशनशिप्स, ये उन्होंने आपसे कहा था बिग बॉस में. या वो रील भी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे. आई नो व्हेन आई गॉट आउट आई सॉ दैट. दैट वाज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल थिंग दैट ही सेड टू मी. और वो मुझे खुद के बारे में नहीं पता था. दैट्स व्हाट आई लर्नड अबाउट माई सेल्फ इन दैट हाउस. कि मुझे हमेशा लगता था कि अगर नहीं है ना तो मैं निकल लेती हूँ. मैं नहीं निकलती भाई. मैं उस इंसान को बहुत मौके देती हूँ. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट माई सेल्फ कि मैं इतना ईजीली किसी को नहीं छोड़ पाती. आई कीप ट्राइंग. और मैं तब तक कोशिश करती रहती हूँ जब तक मैं पूरी तरह खाली नहीं हो जाती कि मुझ में अब कुछ बचा ही नहीं है और देने के लिए. तब तक मैं कोशिश करती हूँ. और जब पूरी तरह मुझ में एनर्जी स्ट्रेंथ सब ख़त्म हो जाती है तब जाके मैं चली जाती हूँ. That's when you are exhausted. Yeah, that's when I'm exhausted. That's when I'm done. So I don't give up easily is what I've learned. Do you think this is one of the qualities that people are afraid of, that she doesn't give up, she loves way too much? People are afraid of that maybe. Well, if your hands are not strong enough to take care of the love that I give you, then it's not my fault. It's yours. आज की जिया को अगर जो छोटी बच्ची थी पहले की, उसको अगर कोई लेटर लिखना हो तो वो क्या लिखेगी? Oof. Oh God. Too many things. I don't know, I'll just be like, hi, it's me, the future you, from the future. मतलब now you must be thinking that ये कौन पागल है. But हाँ, तू कुछ सालों में थोड़ी सी हो जाएगी crack. But then the thing is, you wouldn't care. You wouldn't care what people think about you. You wouldn't care, and I think that's what really matters. So even now, अभी से अगर you stop caring कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ये कर दूँ, अगर मैं ये बोल दूँ, अगर मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है यार, कर ले गलती, एक ही लाइफ है, क्या करना है? कौन सा तुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है अगर तू हर टाइम सही होगी? ठीक है, कर ले गलतियाँ, बिंदास कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें से भी तो बहुत कुछ सीखने वाली है. एंड लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल. फुल प्योर ओल्ड स्कूल. मैं हूँ ओल्ड स्कूल यार. गलत जनरेशन, गलत टाइमिंग पे पैदा हुई हूँ मैं. +1. या एंड ये कहाँ से और ये कब हुआ? ये हुकअप कल्चर कब आ गया? आई डोंट लाइक सेइंग द वर्ड हेट, बट आई हेट इट. मेरे से नहीं होता ये हुकअप कल्चर, ये वो. भाई तुमको एक लड़की धोखा दे गई तो मैं क्या करूँ? तुम 100 को धोखा दोगे. हाँ यार, मुझे भी धोखा मिला है. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर लड़की कम. थोड़ा फ्लो में निकल तो नहीं होता. और मुझसे मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि शायद हम 2 साल मैक्सिमम, 2 साल में भी नहीं मिला ना मम्मी को बोल देंगे अरेंज मैरिज का टाइम आ गया है. क्योंकि मैं हूँ यार, मैं वो लड़की हूँ जिसको मतलब करनी है शादी, जिसको चाहिए फैमिली. मैं पता है, मतलब मैं अभी ऐसे बोल दूंगी कि नहीं ये सारी चीज़ें कौन करता है यार, ये वो क्या होता है वो व्हाट इज दैट, फास्ट डेटिंग, फास्ट दैट यू डू, करवा चौथ. करवा चौथ. ओके, यू वर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. करवा चौथ. तो जिसका नाम तो कभी याद नहीं आ रहा था, वो भी करने के लिए तैयार हूँ. पता है, I want to do all that. 16 सोमवार किए. 16 सोमवार कर चुकी हूँ मैं. क्या बताऊँ? जब वक्त सही होगा अपने आप it will just fall on your lap. Yeah, I've heard that a zillion times. So have I. Just passing
passing it on to you. मतलब it's like you're talking to yourself, you know, when you're giving advice to someone else, you're talking to yourself. Yeah. वो advice ना हम खुद पर कभी apply नहीं करते हैं. तो खैर. Yes, काफी कुछ है. आपको याद है आपने कैमरा पहली बार कब फेस किया था? How were you at that moment? Nervousness थी? क्या था? The range of emotions that were going on. Oh wow! It was like after I think a lot of auditions that I sat in, that was that finally एक दिन आया कि अब तो जाना ही है, अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को ये तो नहीं बता सकती ना कि मतलब सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रही हूँ मैं, इतनी भी तो खराब नहीं हूँ. तो अब तो जाना पड़ेगा. मम्मी को कैसे बताऊँ कि मैं तो ऑडिशन दे ही नहीं रही, मैं तो बस जाके वहाँ पे बैठ रही हूँ और लोग ऑडिशन देते हुए देख रही हूँ. मैं खैर इतना देख ही लिया है तो आज तो कर ही देते, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सा लोग जानते हैं मुझे जो मेरे बारे में बात करेंगे. मैं गई, I was literally shaking from head to toe. ऐसा वो स्लेट पकड़ के मतलब वो क्या होता है ना, डर, वो नर्वसनेस, वो तब मैंने एक्सपीरियंस की. लाइक व्हेन योर बॉडी लिटरली शिवर्स फ्रॉम हेड टू टो, वो मैंने तब एक्सपीरियंस किया है. क्योंकि एड ऑडिशंस और उसके लिए तो सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं तुम्हारे सामने, और यहाँ का कैमरा है और वहीं पे तुम कर रहे हो, सारे तुमको देख रहे हैं, एंड यू हैव टू डू दैट. Then how did it turn out to be? ऑब्वियसली बैड. तो पहला तो वैसे था, बट वैसे करते करते शुरुआत हुई. देन आई गेन सम कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, प्रोफाइल तो देनी है. तो And on the set, like your first film was a Telugu film in 2013. oh my तब god, जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया था on the set, of course it must have been a very different feeling than what you do during auditions और यहाँ पर आप जो कर रहे हो. कैसा रहा वहाँ का पूरा माहौल? oh that I genuinely feel that, I mean, I shouldn't have done that. Right? I should have started with something here, maybe television. I should have started with television or something. क्योंकि वो तो वैसा था कि मेरा एक्टिंग का ही पहला एक्सपीरियंस, ऊपर से लैंग्वेज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए. बट देन आई डिड अ डिसेंट जॉब. ठीक, उसके बाद मेरी खबरें थी वैसे तो रिलीज किया. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इवन दैट. क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसी हूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रहा है ना, मुझे एक लॉट में से मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है मैं उस पर कूदूँगी. क्योंकि खाना बनाते वक्त भी मैंने रोटियाँ बनानी पहली सीखी. Same here. या Yes. आई लव दैट. वो मुश्किल काम हो गया ना, फिर बाकी सब ईजी लगता है. Right. And also because we want to prove ourselves. आई डोंट नो, बट मेरी वो आदत है कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो कर लो, फिर बाकी सब मक्खन बाकी है. आराम से हो जाएगा. हाँ. Yes, that's true. Although I wouldn't advise someone do that. Can't do that. Yeah. Like difficult चीज़ जो है वो पहले ख़त्म करके कर दो, आराम Yeah. से फिर आसान होता रहेगा. That is there. So you did a Tamil film also. And Yes. How was your experience shooting down south? It was beautiful. I mean, I love how South Indians work. Very punctual. And the way they work, it's a little different than here. Little, itna zyada nahi hai, but I love the way they are always very punctual. There's a lot of respect, and I love all those things. Also food. Yeah. So वो सारी चीज़ें हैं. So I think, I mean, I recently did one a film, Tamil film again. Oh, congratulations. Thank you. That I think is the most beautiful experience I've had ever, like ever, in my entire journey in this industry. That is the most beautiful experience that I've had. Working with the director, the production, like everybody, they were so good, and मुझे बहुत मज़ा आया. Like what beautiful people. इतने, मतलब तुमको ना ऐसे किसी ना किसी से कभी ना कभी प्रॉब्लम होगी सेट पे. मुझे ये नहीं पसंद है, कोई ना कोई तो तुम्हें नहीं पसंद होगा, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. बट ऑन दैट सेट, like everyone
were brilliant at their jobs, plus they were such wonderful people, wonderful human beings, and wonderful people to work with in general. Because I am full of love. Like मैं जा रही हूँ काम पे, मेरी energy full high, क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं set पे होती हूँ. That is my favorite place to be. So, you know, I'm very like giving, and I love interacting with people, and I love that energy that you give off on sets. So this film is released, or it's going to release? It is going to release. Please tell us more about it then. I kind of can't. You can't, okay. I mean, no, but I'm really You're excited. done with the for shoot? it. Oh yeah, just one day of shoot. That's remaining. Really But looking I'm forward to it. extremely excited for it because I have performed really well in it, and I really hope people love it. Oh, we're really looking forward to that. Thank Is you. it releasing anytime soon? Hopefully this year itself. This year? Yeah. We'll definitely keep a watch at it. Thank you. Yes. You did Hindi TV shows, Yes. and then you did web series as well, and then you did a film called Wade. Yes. Yeah, that's a beautiful film. Thank you. So, it's your native language film. How have you benefited from that film? I love that I could connect with my people. You know, people who speak the same language. Otherwise, मेरे लिए लोग तो सारे अपने यार. But you know, like it's the language जो तुम बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, और वो लोग, obviously you will give them the first prize. You'll feel like home with those people. तो उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है, and also like the film did so well Very well. कि बहुत नॉन महाराष्ट्रन्स ने भी फिल्म देखी है, and now it's dubbed in Hindi as well. तो हिंदी में भी फिल्म अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने देखी, नॉन महाराष्ट्रन्स as well. So I received a lot of love from that film, a lot of love, and it is a beautiful film. So, how has life changed for you after that film? Yes, it did. In what ways? It did. In ways like, you know, you wait for the time कि इंडस्ट्री में ही, मतलब बाकी लोग तो छोड़ो, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि लोग, हर कोई तुम्हें पहचाने, फॉर यू टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम, कि घर घर में तुम्हें सब जानते हैं शाहरुख खान कौन है. उसमें शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बट फॉर एटलीस्ट द इंडस्ट्री पीपल टू नो हु यू आर, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो आई थिंक आफ्टर वेड a lot of industry people got to know about me, and they got to know who Jiya Shankar is, and they also now know that she's a good actor. We know of her. Yeah, we should work with her. We should. Yeah, I saw Karan Johar had reposted one of your tweets, one of your stories on Instagram. So, how is it with him? Any movie online? I wish, yaar. Well, I really wish, but no, there's no such thing at the moment. But I really hope I get to work with not just Karan Johar, but all these amazing directors and producers that we have in our industry. I really hope कि वो time आए मेरे लिए भी, that I get to work with them. Like I can't, like if I start naming people, वो list बहुत लंबी हो जाएगी. But I have my favorite directors that it's a dream to work with them. Top 3? Top 3, oh my god, बहुत difficult है, बहुत difficult. Obviously Karan Johar, Imtiaz Ali. Yes. You know, actually, we would love to see you in an Imtiaz Ali film. Oh, I would kill to be in a Imtiaz Ali film. I love. जहाँ पर मैं वैसे प्यार देखती हूँ, मैं पिघल जाती हूँ, मतलब कहीं पे भी, और वो कैसा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, कपल का हो, लाइक कैसा भी रिश्ता हो, when I see a relationship, when I see there's love, I love that. You love love. Yeah. Okay. हाँ, Imtiaz Ali, Karan Johar, and? Oh God. Sanjay Leela Bhansali. Of course. And Zoya Akhtar. Yes. And यार ये लिस्ट तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं बता रही हूँ. Like there's such amazing directors out there. I really wish that I
एक्टर्स में कोई है जो आप सच में चाहते हो कि इफ पहली जो हिंदी फिल्म होगी वो मैं इनके साथ करना चाहूँगी, लाइक इट वुड बी लवली इफ यू कुड मैनेज टू डू विद दैट एक्टर? ओह, वैसे एक्टर्स के बारे में इतना नहीं सोचती मैं. It's directors that you are keen on. Yeah. For me, it's the directors that I'm keen on. Like, I really want to work with this because I am a performer. तो मेरे लिए वो है कि अगर एक बहुत बढ़िया एक्टर और एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर जब साथ में आके काम करते हैं, then you create magic on screen. Yes. No, and when that happens, it satisfies your creative soul. Yes, and I'm looking for that. Obviously, like a really good co-actor also adds onto it a lot. Yeah. A lot. So yeah, but I don't have any such in my head. वैसे I would love to work with everyone. Like अभी जो भी है in the top or जो भी actors अभी फिलहाल Bollywood में हैं, all of them are doing really great. I would love to work with everyone. Ritesh Deshmukh sir के साथ are you in touch after the movie? Did you manage to stay in touch? How is it with him, the equation, and even Janelia? They are such beautiful souls. जब मेरी mom अभी recently hospitalized थी, I had only tweeted. मैंने बस एक tweet किया था कि you know, like because I believe अगर दवा काम नहीं आए तो दुआ आएगी. So इसीलिए I tweeted that कि मेरी जनता है, people who love me and who also know my mom, तो they also love her, तो please keep her in your prayers. Because तब मैं बहुत disturbed थी, like to another extent, when my mom was sick and hospitalized. Then वो tweet इतना viral हो गया that it reached a lot of people, and a lot of people messaged me or they've tweeted for me and praying for my mom. And that's when it reached Janelia as well, and she called me. Awesome. And she's a sweetheart. मतलब वो दोनों, they are couple goals पहले तो, but they are also wonderful human beings. तो Janelia called me. Obviously, I spoke to Ritesh sir as well then, and they obviously told me if there's anything I could tell them if I needed help. So they're very sweet, very very sweet. Like you're blessed if you get to know them. Yeah. आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? Oh, now she's great. हाँ, अब वो वापस वो जिद पे आ गई है. पहले तो जब हॉस्पिटल मैं सब करूँगी, इसके बाद मैं योगा करूँगी, देखो मैं जिम करूँगी. अब सब ठीक हो गया ना. अब नहीं कर रहे. अब कब जाना है जिम? कल से पक्का. कल से वो कल नहीं. कल कांस्टेंट है.